Vishwasai. A recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. Vanandva Ganapatikum Havamahe Kavin Kavinamupamasravastamam Jeshwarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrunvannotibhissedasadanam Prano Devi Saraswati Vaje Bharvajinivati Dhinama Vitriyavatu Shri Mahaganathipataye Namaha Shri Mahasaraswatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hare Om. कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम हे दीनानाथ साई राम. नमस्कार, मैं अशोक व्यास. आप देख रहे हैं शिरडी साई विश्व साई प्रोग्राम, एंड टुडे दिस इज द 15th episode of this special program which has found its origin by the grace of Shirdi Sai Baba and by special blessing of Vishwa Yogi Vishwamji Maharaj, and of course wholehearted support from Nuri Foundation, which is behind establishing two temples, one here in Baldwin, that is Long Island, New York, and there's another one which is located in New Jersey, Islin. The celebration of life demands a sense of reverence for life, and when we are in close proximity of that kind of an umbrella of grace which fills us with a touch of calmness, peace, and that peace has found its way to millions of hearts by Shirdi Baba's grace in this era, and he has always stressed on Shraddha and Saburi. Talking about Shraddha and its relationship with the artistic expression which is bestowed upon human beings, especially Indian classical music, makes a wonderful way of celebrating the inner richness. In series of various special programs that are being organized at the Baldwin temple of Shirdi Baba, that is Sai Mandir Baldwin, recently there was a concert by Roshni Padmanabhan. Shri Ganesha Charanam, Shri Ganesha Charanam Gajanana, Shri Ganesha Charanam Gajanana, Devar Munivar Paniyum Dayakara, Shri Ganesha Charanam Gajananam, Devar Munivar Paniyum Dayakara, Shri Ganesha Sharanam Gajananam, Devar Munivar Paniyum Dayakara, Shri Ganesha Sharanam Gajananam, Devar Munivar Paniyum Dayakara, Shri Ganesha Charanam. Basically, I'm a graduate of BTech Information Technology from India, and I worked in various roles, I should say, for about 5 years. And right now I'm pursuing my Masters in Health Informatics, MS in Health Informatics from Northeastern University. Roshni Padmanabhanji, Sai Ram. So it was a beautiful, wonderful, melodious devotional concert here at the temple. How much practice it must have involved to reach to the stage where you have such a wonderful command on your voice
that it can touch hearts and minds at the same time? Sairam, first I should attribute whatever you said right now, the difficulties, the what it took me to get here. First, Babaji's blessings, needless to say, and of course my music teacher, Mrs. Brinda Tyagarajan, who has brought me to this stage. What I am today is because of my Guru. So I would like to dedicate all these to my Guru and the support that I got from my parents, who encouraged me at every stage, and continuing to get that support from my husband and his parents too. So I should call myself blessed, and it did take, and it was purely Baba's blessings, because at this point in time, with my 2-year-old daughter, I should not complain at all, because she's being really, really cooperative, and she's equally interested in music is what I should say. So once again, all is because of Babaji's blessings, Sai Ram's blessings, that's it. कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम ये दीननाथ साई राम कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम ये दीननाथ साई राम ये दीननाथ साई राम ये दीननाथ साई राम तुमको भक्तों के योग वदारा भक्तों के योग वदारा तुमको भक्तों के योग वदारा तुमको नंद नंद खिलाला तुमको भक्तों के योग वदारा तुमको नंद नंद खिलाला भर्ती पूरी ये साई गोपाल शिरडी पूरी ये साई गोपाल ये दीननाथ साई राम भर्ती पूरी साई गोपाल शिरडी पूरी ये साई गोपाल ये दीननाथ साई राम ये दीननाथ साई राम ये दीननाथ साई राम कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम ये दीननाथ साई राम 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 Talking about celebration, Indian culture has given us gift of many enriching utsavas. And recently, a little while ago, when Ramanavami, which was a deer festival,
of Shirdi Baba also was observed here at Baldwin. We have shared glimpses of this festival with you in Shirdi Sai Vishnu Sai, and today we also bring a little bit of experience of Rao Anumoluji as well as Dr. Gaddam Reddy, who were also present to participate in this wonderful, colorful, uplifting celebration of Ram Navami at Sai Mandir. येन बध्नोपदी राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा परिबध्नामि रक्षाबन्धनमाचरेत्. మీరందరూ క్లాప్స్ కొట్టకపోతే రావడానికి ఉత్సాహం రావట్లేదు. ఏమండి, సీతమ్మ వారి పక్షం వాళ్ళు అంత తక్కువ కొడితే బిగ్ క్లాప్స్ కొట్టారు ఒకసారి. రాముడు కళ్యాణం. సీతమ్మ వారు రాముడు కాదు, సీతారాముడు తప్పట్లు కొట్టండి. राजा रामचंद्र भगवान की जय, मात की, पवन सुत हनुमान की. You have been an active participant in various ritual as well as religious festivals. What is the feeling like when you witness or you be a participant in such occasions? In this occasion, the way that Rama Sita Kalyanam was performed was unique by the two priests, the Srinath and also the Mahadev. It was, rituals were excellent, unbelievably done, and after a long time I had this opportunity to come, and Dr. Nori's initiation of this temple is bringing up great service to the community and also to humanity at large. मुरहरो मत्स्यावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वरः करुणया द्यात् सदा मङ्गलम्. सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना. राम 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 जय कोदंड रामा, राम राम जय कोदंड रामा, राम राम जय कल्याण रामा, राम जय कल्याण रामा. Rao Anumoluji, share with us your experience of witnessing and participating in Ram Janaki Kalyan Mahotsavam here at Baldwin Temple. Today it is done in all the languages. All the participants are of true. It's a rainbow of all Indian cultures congregated here, and it gave us mental peace for at least 3 to 4 hours. All this duration, it has been a very special way we felt after this Ram Kalyanam. I thank you for that. And also, real quick, the special presence of Shirdi Baba in the life of many devotees is shared by them in ways which are beyond comprehension. In your case, you have been actively associated with this temple and of course with Shirdi Baba. Share with us your experience. Experiences have been very positive. Everything we have tried to achieve, we did achieve it, and things have happened, and that is our testimony to that activity. Ram 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 Jaya Sitaram, Ram 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 Jaya Kodand Rama, Ram Ram Jaya Kodand Rama, Ram Ram Jaya Kalyan Rama, Ram Jaya Kalyan Rama. So coming here and witnessing the Kalyanam of the Lord Shiva, Lord Rama and Sita Devi is an incredible blessing for all of us. So his presence is felt by all the devotees, and Baba's blessings to one and everyone here. ओम चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु.
వాసిష్ఠమైత్రావరుణకౌండిన్యత్రయా ఋషేయ ప్రోర వసిష్ఠగోత్రోద్భవస్య నాభాగమహారాజవర్మణో నప్త్రే చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు వాసిష్ఠమైత్రావరుణకౌండిన్యత్రయా ఋషేయ ప్రవరాన్విత గోత్రోద్భవస్య అజమహారాజవర్మణః పుత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు వాసిష్ఠమైత్రావరుణకౌండిన్యత్రయా ఋషేయ ప్రవరాన్విత గోత్రోద్భవ దశరథమహారాజవర్మణః పుత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు వాసిష్ఠమైత్రావరుణకౌండిన్యత్రయా ఋషేయ ప్రవరాన్విత గోత్రోద్భవస్య సాక్షాత్ సకల భువనాధీశ్వరాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ బ్రహ్మాండ నాయకాయ తీతాయ శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వరూపిణే రాయ సాక్షాల్ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ వరాయ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రవర. Who is the father of Rama and grandfather and grand-grandfather? This is the Vamsha Vruksham is chanting in the Kalyanam. Not only in the Devata Kalyanam, Manav Kalyanam also we are chanting. This is called Pravara. Means Nabhaga Maharaja is the king. His son is called Ajamaharaja. Ajamaharaja's son is called Dasharatha Maharaja. Sri Rama is the son of the Dasharatha Maharaja. This is called Raghuvamsham, Ikshvaka Vamsham, Surya Vamsham. This is about Rama we chanted. Our sages and our scriptures have given us various ways of invoking his presence. Now here, as you see, Shirdi Sai Baba, comparatively a recent manifestation of the Lord. How do you feel about this openness of people to embrace divine in this form of Shirdi Baba? I was not believing in the past, Shirdi Sai Baba's, because he is like a human being. But I saw it in Robinson Lane and in Shirdi Sai Baba temple here. I am a devotee of Shirdi Sai Baba, and I changed myself into fall into his feet and take the grace from him for me and for the humanity at large. That is my opinion about. I changed. I was not a devotee of Shirdi Sai Baba, not knowing the details of the things he has done for humanity. కోదండ రామ నిన్నే నమ్మినానురా భద్రాద్రి రామ నిన్నే నమ్మినానురా. As mentioned earlier, special blessings of Vishwayogi Vishwamji Maharaj has made this program possible, and here is this clip of Vishwayogi Vishwamji Maharaj while he was addressing at Sai Mandir. God is the omnipresent cosmic energy which is pervading through every atom of the universe, which is responsible for the creation of the universe, which is maintaining the administration of the universe perfectly. That is God. You may call it by any name. Yehovah, Allah, లేక మీ ఇష్టం లేకపోతే అతీతమైన శక్తి, natural force, cosmic energy ఏదైనా పెట్టుకోండి. అది భగవంతుడు అంటే అది ఆది పరాశక్తి, అది వేదమాత. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. 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 సత్యం జ్ఞానం. సత్యం జ్ఞానం. సత్యమనంతం. సత్యమనంతం. సత్యం జ్ఞానం. సత్యం జ్ఞానం. సత్యమనంతం. సత్యమనంతం. సత్యం బ్రహ్మ. సత్యం బ్రహ్మ. జ్ఞానం సత్యం. జ్ఞానం సత్యం. జ్ఞానమనంతం. జ్ఞానమనంతం. జ్ఞానం బ్రహ్మ. జ్ఞానం బ్రహ్మ. అనంతం సత్యం. అనంతం సత్యం. అనంతం జ్ఞానం. అనంతం జ్ఞానం. అనంతం బ్రహ్మ. అనంతం బ్రహ్మ. బ్రహ్మ సత్యం.
सत्यम ब्रह्मा सत्यम ब्रह्मा ज्ञानम ब्रह्मा ज्ञानम ब्रह्मा अनंतम ब्रह्मा अनंतम ब्रह्मा 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 ब्रह्मा. Reading scriptures is a way of connecting ourselves with that highway of enriching life which we all aspire for. यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन और गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना इस प्रकार है। बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा और श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना। उनकी सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। मां और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोटे पाटिल और भगत मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा दिया करता था। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं वो मालसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे।
इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को गृही पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है? उस प्रेम का क्या कहना, बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता था? पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेवारी आ पड़ी, इसलिए वो अपने घर जाकर रहने लगे। राहता निवासी खुशहाल चंद। शिरडी के गणपत तात्या कोते को बाबा बहुत ही चाहते थे। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उनके भतीजे खुशहाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। खुशहाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते, कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते, आनंद और प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट जाते थे। एक और राहता दक्षिण में और दूसरी ओर नीम गांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी देखी भी नहीं और न कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशहाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किस प्रकार उन्होंने काका साहब दीक्षित को राहता जाकर खुशहाल चंद को लिवा लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशहाल चंद से स्वप्न में शिरडी आने को कहा, इसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है, क्योंकि इसका वर्णन इस सचरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। शिरडी साई विश्व साई के इस 15वें एपिसोड का समापन करने से पहले समथिंग न्यू। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ क्विज एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर रिप्लाईज ऑन shirdisai@gmail.com. And the question for this episode is who has the credit of having written Sai Charitra for us? So you just have to write the name of the author of Sai Charitra and send this to shirdisai@gmail.com, and then we'll pick the winner, and the gift is going to be a surprise for now. But it has been a pleasure being with you. Thank you very much for joining us again on Shirdi Sai Vishwa Sai. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिप्रियवतु। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu.